Question: if 125 to the power x equal to 3125, then the value of x is। तो इसमें गिवन दिया हुआ 125 टू द पावर x इज इक्वल टू 3125। तो पहले हम 125 और 3125 का फैक्टर निकालते हैं। सो 125 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 का टेबल से ही 25, फिर अगेन 5 का टेबल से ही 5, और 3125 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो 5 से लेंगे तो ये 625 आएगा, फिर 5 से लेंगे तो ये 125, और फिर अगेन 5 से तो ये 25 आएगा, फिर 5 से ये 5। सो implies that 125 is 5 to the power q to the power x and 3125 is 5 to the power 5, और 5 to the power ये क्या होगा 3x, और ये 5 to the power 5। बेस से हमें तो क्या होगा 3x is equal to 5, so x equal to 5/3 answer। So option A is the correct answer। If √5 to the power 7 divide √5 to the power 5 equal to 5 to the power p, then the value of p is। तो हम सबसे पहले गिवन वाले पार्ट को लिखते हैं। √5 to the power 7 divide √5 to the power 5 is equal to 5 to the power p। तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे a to the power m डिवाइड a to the power n। तो डिवाइड के केस में पावर क्या होता है माइनस होता है। तो इस फॉर्मूला को, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो ये होगा हमारा √5 की पावर 7 माइनस 5, और हम इस 5 को लिख सकते हैं इस टाइप से 5 की पावर 1/2 इंटू 2p। तो ये हो गया √5 की पावर 2, और इसको हम लिख सकते हैं √5 टू द पावर 2p। तो बेस से में तो क्या होगा पावर इक्वल होगा 2 इक्वल टू 2p। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 2/2 1 आंसर। So option A is the correct answer। If 3 to the power x minus y equal to 27, 3 to the power x plus y equal to 243, then find the value of x। तो इस क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, और गिवन है 3 to the power x minus y is equal to 27 and 3 to the power x plus y is equal to 243। So 3 to the power x minus y is equal to 27 जो होता है वो 3 की पावर क्यूब होता है। सो x minus y is equal to 3, और इसमें 3 to the power x plus y is equal to 243 होता है 3 की पावर 5। सो x plus y is equal to 5। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, दिस वन इज द सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा x माइनस वाई प्लस 3, और ये x प्लस वाई से x की वैल्यू आ जाएगी जैसे y कैंसिल। सो 2x इक्वल टू 8, सो x इज इक्वल टू 8/2 4 आंसर। सो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। If 2 to the power 2x minus y equal to 16 and 2 to the power x plus y equal to 32, so the value of x into y is। तो इसमें गिवन है 2 to the power 2x minus y is equal to 16 and 2 to the power x plus y equal to 32, implies that 2 to the power 2x minus y 16 होता है 2 की पावर 4, 2 to the power x plus y equal to 32 2 की पावर 5, implies that बेस सेम रहने से क्या होगा इसके पावर इक्वल होगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इक्वेशन इज सेकेंड। हम दोनों को ऐड कर देते हैं 1 प्लस 2 इक्वेशन। सो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, और ये x प्लस वाई इक्वल टू 5, y कैंसिल। सो 3x इक्वल टू 9, सो x इक्वल टू 9/3।
3, 3 3 is 9, so x equal to 3. Putting x equal to 3 in सेकेंड, तो सेकेंड में हम x के प्लेस में 3 पुट करेंगे तो ये होगा 3 प्लस वाई इक्वल टू 5. सो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. सो देयर फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 इंटू 2, 6 आंसर. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. If 4 to the power x plus y equal to 256 and 256 to the power x minus y equal to 4, then what is the value of x and y? तो इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना है और ये गिवन क्या है. 4 to the power x plus y is equal to 256 and 256 to the power x minus y equal to 4. तो 4 to the power x plus y और 256 जो होता है 4 के पावर 4 होगा. 4 to the power 4 and to the power x minus y is equal to 4. बेस से में तो इसमें हो जाएगा x plus y equal to 4. दिस इक्वेशन इज फर्स्ट. इसमें पावर पावर मल्टीप्लाई होगा 4x minus 4y और 4 to the power 1. तो इसमें बेस सेम हो गया तो उसके पावर इक्वल होंगे. 4x minus 4y is equal to 1. दिस इक्वेशन इज सेकेंड. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकेंड के साथ ऐड कर देते हैं. तो ये होगा हमारा 4x plus 4y प्लस इक्वल टू 16 और ये 4x minus 4y is equal to 1. तो ये कैंसिल हो गया. सो 8x इज इक्वल टू 17. सो x इक्वल टू 17/8. और अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 17/8 फर्स्ट में पुट कर देते हैं. तो ये होगा 17/8 प्लस y इज इक्वल टू 4. सो y इक्वल टू 4 माइनस 17/8. तो इसमें एलसीएम लेंगे तो ये 32 माइनस 17. सो y इज इक्वल टू 15/8. सो देयरफॉर x इक्वल टू 17/8 एंड y इक्वल टू 15/8 आंसर. So option D is the correct answer. If 3/5 to the power 3 multiply 3/5 to the power minus 6 equal to 3/5 to the power 2x minus 1, then x is equal to. तो इसमें गिवन जो है पहले हम उसको लिखते हैं. टू एक्स माइनस 1. इसमें बेस से में तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 3 प्लस माइनस 6 और ये हो गया 3/5 to the power 2x minus 1. यहाँ पे फॉर्मूले को लिख देते हैं. a to the power m multiply a to the power n is equal to a to the power m plus n. 3/5 to the power 3 minus 6 और ये 3/5 to the power 2x minus 1. So implies that 3/5 to the power minus 3 is equal to 3/5 to the power 2x minus 1. बेस से में तो पावर क्या होगा, इसमें इक्वल होगा. So implies that minus 2x is equal to minus 1 plus 3. So minus 2x equal to 2. So x equal to 2/-2. So x equal to -1 answer. So option A is the correct answer.
solution here given x to the power b plus c to the power b minus c into x to the power c plus a to the power c minus a into x to the power a plus b to the power a minus b is equal to, and we know that x to the power m to the power n is equal to x to the power m into n. So x to the power b plus c into b minus c into x to the power c plus a into c minus a, and x to the power a plus b into a minus b. So is equal to x to the power b square minus c square into x to the power c square minus a square into x to the power a square minus b square. Here base are identical, so we add its power. B square minus c square plus c square minus a square plus a square minus b square. So here b square cancel, c square and a square. So x to the power 0 is equal to 1. Answer. So option C is the correct answer. Which of the following pair of numbers is the solution of the equation 3 to the power x plus 2 plus 3 to the power minus x equal to 10? तो सबसे पहले हम इसके इक्वेशन को लिखते हैं 3 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 3 टू द पावर माइनस x इक्वल टू 10 इम्प्लाइज दैट इसको हम 3 टू द पावर x और 3 टू द पावर स्क्वायर लिखते हैं और इसको हम 1/3 टू द पावर x इम्प्लाइज दैट पहले हम क्या करेंगे लेट लेते हैं इस 3 टू द पावर x को हम सपोज y लेट लेते हैं तो इसके जगह पे हम y लिखेंगे और 3 की स्क्वायर क्या होगा 9 और इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये y 9y स्क्वायर प्लस 1 implies that 9y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये होगा 9y स्क्वायर minus 9y minus y plus 1 is equal to 0 implies that 9y कॉमन लेंगे तो ये y minus 1 और इसमें 1 कॉमन लेंगे तो y minus 1 so y minus 1 into 9y minus 1 is equal to 0 so y minus 1 equal to 0 or 9y minus 1 equal to 0 so y equal to 1 or y equal to 1/9 और इस y को हम क्या लेट लिया था 3 to the power x so 3 to the power x equal to 1 और 3 to the power x equal to 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 3 to the power x equal to 3 to the power 0 और 3 to the power x equal to 3 to the power minus 2 तो यहाँ पे बेस सेम है तो x equal to 0 होगा और ये x equal to minus 2 so therefore x equal to 0, minus 2 answer. So option C is the correct answer. Question: if 27 to the power x plus 27 to the power x minus 1/3 equal to 972, then what is the value of x? So in this question given that 27 to the power x plus 27 to the power x minus 1/3 equal to 972, so implies that 27 to the power x plus 27 to the power x into 27 to the power minus 1/3 972 implies that 27x plus 27x into
3 to the power 3 minus 1 upon 3 equal to 972. Here 27 to the power x as a common, so 1 plus 1 into 3 to the power 3 into minus 1 upon 3, 3 cancel, so 27 to the power x and 1 plus 1 upon 3, so implies that 27 to the power x 4 upon 3 is equal to 972. So implies that 27 to the power x is equal to 972 into 3 upon 4. So cancel by 4. 4 2 is 8, 4 4 is 16 and 4 3 is 12. So implies that 27 is the 3 to the power 3 to the power x is equal to 243 is the power of 3 to the power 5. So implies that 3 to the power 3x is equal to 3 to the power 6. Here base are identical, so 3x is equal to 6, so x equal to 6 upon 3. 3 2 is 6. Answer. So option D is the correct answer. If 2 to the power 3 to the power 2 equal to 4 to the power x, then 3 to the power x is equal to which option? So here given that 2 to the power cube to the power 2 is equal to 4 to the power x, implies that 2 to the power 3 into 2 plus 2 to the power 2 to the power x, so 2 to the power 6 is equal to 2 to the power 2x, so 6 equal to 2x, so therefore x is equal to 6 upon 2, 3. So therefore 3 to the power x is equal to 3 to the power 3 is equal to 27. Answer. So option A is the correct answer. If 9 to the power x plus 2 equal to 240 plus 9 to the power x, so the value of 8x to the power x is, so here given that 9 to the power x plus 2 is equal to 240 plus 9 to the power x, implies that 9 to the power x into 9 to the power 2 minus 9 to the power x is equal to 240, and now we take 9 to the power x as a common, so 9 square minus 1 is equal to 240, implies that 9 to the power x and 81 minus 1 is equal to 240, so implies that 9 to the power x is equal to 80 equal to 240, so 9 to the power x is equal to 240 upon 80, 0 0 cancel, 3 to the power 2 to the power x is equal to 8 3, so 3 to the power 2x is equal to 3 to the power 1, so base are identical, so 2x is equal to 1, so x equal to 1 upon 2, so therefore 8x to the power x is equal to 8 into 1 by 2 to the power 1 upon 2, so cancel by 4, 4 to the power 1 by 2 and 2 to the power 2 upon 1 by 2, 2 cancel, so is equal to 2, which is the required answer. So option D is the correct answer. The value of d to the power s plus t divide d to the power s divide d to the power t is d to the power s plus t divide d to the power s divide d to the power t is equal to d to the power s plus t minus s divide d to the power t, so is equal to, here s cancel,
d to the power t divide d to the power t is equal to d to the power t minus t. So d to the power 0 is equal to 1. Answer. So option C is the correct answer. If root under 3 to the power n is equal to 2187, then the value of n is. So in this question is given that 3 to the power n under 2187. So first of all we find its factors. 2187, table of 3, 7 3 ja, and 3 2 ja 6, 9, and again table of 3, 3 2 ja 6, 4 3 ja 12, 3 3 ja 9, again table of 3, 8 and 1, 27, 9, 3. So 3 to the power n to the power half is equal to 2187, 1 2 3 4 5 6 7, 3 to the power 7. So implies that 3 to the power n upon 2 is equal to 3 to the power 7. Here base are identical, so therefore n upon 2 is equal to 7. So n equal to 7 into 2, 14. Answer. So option C is the correct answer. If 2 to the power x plus 4 minus 2 to the power x plus 2 equal to 3, then the value of x is. So here given that 2 to the power x plus 4 minus 2 to the power x plus 2 is equal to 3. So 2 to the power x into 2 to the power 4 minus 2 to the power x into 2 to the power 2 is equal to 3. Because we know that a to the power m plus n is equal to a to the power m into a to the power n. So here 2 to the power x has a common. So 2 to the power 4 minus 2 to the power 2 is equal to 3. 2 to the power x and 2 to the power 4 is equal to 16 and minus 4. So 2 to the power x into 12 is equal to 3. So 2 to the power x equal to 3 by 12. Cancel by 3 4 ja 12. Implies that. So 2 to the power x equal to 1 upon 2 to the power 2. So 2 to the power x is equal to 2 to the power minus 2. So therefore x equal to minus 2. Answer. So option A is the correct answer. If x to the power x root x equal to x root x to the power x, then x equal. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं. x root x to the power x implies that x, और इस x root x को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x into x to the power 1 by 2, so x की पावर 1 plus 1 by 2, तो ये हो गया 3 by 2. तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3 upon 2 इक्वल टू, और इससे भी हम लिख सकते हैं x की पावर 3 upon 2. सो इम्प्लाइज दैट x to the power 3 upon 2 is equal to x to the power, इसमें पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा 3x upon 2. So here base are identical. So x to the power 3 upon 2 is equal to 3 by 2x. अब क्या करेंगे, इस x को हम लेफ्ट की तरफ लाएंगे तो ये होगा 3 upon 2. So x की पावर 3 by 2 minus 1 is equal to 3 upon 2. So x की पावर 1 upon 2 is equal to 3 upon 2. Now squaring both sides, so we get x to the power 1 upon 2 whole square upon equal to 3 upon 2 to the power 2. So x is equal to 9 upon 2, 4. Answer. So option D is the correct answer. If x asterisk y equal to 3x plus 2y, then 2 asterisk 3 plus 3 asterisk 4 is equal to.
So here given x asterisk y is equal to 3x plus 2y. So 2 asterisk 3 is equal to 3 into 2 plus 2 into 3. So 6 plus 6 is equal to 12, and 3 asterisk 4 is equal to 3 into 3 plus 2 into 4. So it's equal to 9 plus 8 is equal to 17. So therefore 2 asterisk 3 plus 3 asterisk 4 is equal to 12 plus 17. So is equal to 29. So which is the required answer? So option C is the correct answer. If a upon 2 equal to b upon 3 equal to c upon 5, then a plus b plus c upon c is equal to, तो इस क्वेश्चन में गिवन है a upon 2 इक्वल टू b upon 3 इक्वल टू c upon 5, तो इसको हम k लिख लेते हैं. So a is equal to 2k, b equal to 3k और c equal to 5k. So therefore a plus b plus c upon c is equal to 2k plus 3k plus 5k upon 5k. So is equal to 10k upon 5k. k से k cancel और 5 to 10 equal to 2. Answer. So option D is the correct answer. If a upon b equal to c upon d equal to e upon f equal to 3, then 2a square plus 3c square plus 4e square upon 2b square plus 3d square plus 4f square is equal to what? So here given a upon b equal to c upon d equal to e upon f equal to 3. So implies that a equal to 3b, c equal to 3d, e equal to 3f. So therefore 2a square plus 3c square plus 4e square upon 2b square plus 3d square plus 4f square is equal to 2 into 3b square plus 3 into 3d square plus 4 into 3f whole square. 3d square plus 4f square. So is equal to 2 into 9b square plus 3 into 9d square plus 4 into 9f square upon 2b square plus 3d square plus 4f square. 9 as a common from numerator, so we get 2b square plus 3d square plus 4f square upon 2b square plus 3d square plus 4f square. So this one is cancelled, so is equal to 9. Answer. So option D is the correct answer. If a plus b equal to 17 and a minus b equal to 9, then the value of 4a square plus 4b square is. तो a प्लस b की वैल्यू 17 है और a माइनस b इक्वल टू 9 है और हमें ये फाइंड करना है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर. सो a प्लस b इक्वल टू 17, दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, और a माइनस b इज इक्वल टू 9, दिस वन इज सेकंड. सो b भी कैंसिल. सो 2a इक्वल टू 26. सो a इक्वल टू 26 अपॉन 2 equal to 13. So putting
a equal to 13 in first, so we get 13 plus b equal to 17. So b equal to 17 minus 13, so is equal to 4. So therefore तो हमें फाइंड करना है 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, और इन दोनों में 4 कॉमन है ना। अब हम इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है 13 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 169 प्लस 16, सो 4 और इनको ऐड करेंगे तो 185, और इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करने से 740. सो विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर? सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. If x minus y equal to x plus y upon 7 equal to xy upon 4, then numerical value of xy is, here given that x minus y is equal to x plus y upon 7 equal to xy upon 4. Let so x minus y is equal to k and x plus y is equal to 7k. Suppose this equation is first, this one is second, and xy is equal to 4k, this one is third. So adding equation 1 and 2, so we get 2x is equal to 8k, so x equal to 4k. Putting x equal to 4k in equation second, so we get 4k plus y is equal to 7k, so y is equal to 7k minus 4k equal to 3k. And now we putting the value of x and y in equation third, so we get 4k into 3k is equal to 4k, that 12k square minus 4k equal to 0, taking 4k as a common, so 3k minus 1 is equal to 0, so 4k equal to 0 or 3k minus 1 equal to 0, so k equal to 1 upon 3 or k equal to 0, so k equal to 0 not possible. So therefore xy is equal to 4k into 3k, so 12k square equal to 12 into 1 by 9, cancel by table of 3, 4 3 ja and 3 3 ja, so 4 upon 3 is the required answer. So option C is the correct answer.